So finally, we started our Kerala journey from Pune. Our flight was at 1 am, full of excitement and zero sleep. The ticket cost was around 5,500 per person, and our destination is Kochi, where the real adventure begins. It's 6 nights, 7 days trip packed with beaches, hill station, backwater, and amazing food. Stay tuned for places to visit, complete cost, and travel tips. Let's begin this Kerala adventure together. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग एक न्यू ट्रिप चालू कर रहे हैं जो कि है केरला ट्रिप। तो हम लोग कल पुणे से फ़्लाइट लेकर कोची आए हैं एंड टुडे इज़ आवर फर्स्ट डे एट कोची। वी आर गोइंग कोची टू मुन्नार और हम लोग रास्ते में साइट सीइंग करने वाले हैं। सो बने रहिए। तो हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग रुके एक प्योर वेज रेस्टोरेंट में। फ्रॉम कोची टू मुन्नार ऑन द वे आता है। रेस्टोरेंट का नाम है रसा। प्योर ऑथेंटिक केरला फूड ऑन बनाना लीफ। इट्स ऑसम। Thali cost us around 245 rupees per plate. Simply delicious and totally worth it. And the best part, we shared one thali between two peoples and it was more than enough for us. हम लोग ने सारे फ्लेवर्स ट्राई किए एंड इट्स वेरी गुड। डू विजिट। Our next stop was this spice and herbal garden. Here we got to see different spice plants and herbal trees up close and learn how they grow. The entry ticket cost was just 100 rupees per person. Totally worth it for the experience. हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं मुन्नार का हॉट एयर बलून राइड। सो हम लोग को पता नहीं था कि यहाँ पे हॉट एयर बलून भी होता है, तो अभी एक्सपीरियंस करेंगे। दिस इज़ गुड, लेट्स सी हाउ इज द एक्सपीरियंस गो। So next we experienced the hot air balloon ride in Munnar and it was absolutely breathtaking. Floating above the beautiful views was such a scenic moment. The ride cost us around 1800 per person and we also took a drone shot video for 500 rupees to capture those epic moments from the sky. Totally worth it for the experience and the view. Should I leave tonight? I don't wanna carry on. I don't wanna feel this fight. Everything inside it's tearing me up and I'm bleeding. फर्स्ट टाइम इन लाइफ ऑफ बकेट लिस्ट। Yes, something new. राइड करके आ चुके हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। थोड़ा डरावना भी था मतलब मुझे डर लगा, श्लोका को भी थोड़ा लगा, पर वसूल है। लाइक हम लोग को अच्छा लगा। ऊपर जाके व्यू बहुत अच्छा है और हॉट एयर बलून एक बार राइड करना था, तो इंडिया में तो हम लोग ने कर लिया। अभी नेक्स्ट टाइम देखते कहाँ करेंगे। So after the beautiful hot air balloon ride, it was finally time to relax and take some rest at our beautiful resort. हम लोग आ चुके हैं मुन्नार। सो वी हैव रीच्ड मुन्नार और ये हमारा आज का स्टे है मुन्नार में, आज का और कल का। सो कल हम लोग लोकल साइट सीइंग करने वाले मुन्नार में और स्टे यहाँ पर ही है। और ये रिसोर्ट ज़बरदस्त है, वी लाइक्ड इट। बहुत अच्छा है, पीसफुल है, ग्रीनरी तो इतनी ज़बरदस्त है यहाँ पे, सही है एकदम। मैं आपको देती हूँ एक छोटा सा रूम टूर। कम ऑन। यस, सो दिस इज़ अ स्मॉल सिट आउट एरिया, spacious room with comfy bed and nice TV setup.
And the best part is this beautiful view. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे इज़ डे 2 इन मुन्नार। तो अभी हम लोग निकले हैं हमारे रिसोर्ट से और हम लोग आज बहुत सारी प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं। मल्टीपल प्लेसेस हैं और लेकिन आप लोग तो बने रहिए। So, on day 2, the first place we visited was a chocolate factory. There we got to experience how chocolate is made and see the entire production process from start to finish. It was super interesting to watch how our favorite chocolates are prepared, and of course tasting them was the best part. Now it was time for our next spot, Eco Point in Munnar. On the way, we experienced the beautiful tea plantation all around us. Lush green view that was absolutely refreshing. The entry ticket for this Eco Point was just 10 rupees per person, making it budget friendly and a scenic spot you shouldn't miss. सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी हम लोग आए हैं मुन्नार के इको पॉइंट पे। उस साइड नीलगिरी फॉरेस्ट है एंड हियर वी आर टू हैव सम इको, बट इको वर्क नहीं कर रहा है। हेलो श्लोका। तो थोड़ा थोड़ा ही वर्क कर रहा है, इतना क्राउड है ऑफकोर्स, लेकिन या दिस इज गुड। Next, we went for a Coracle Boat Ride, and it was such a fun experience. The ticket cost was 200 for adults and 150 for kids, and honestly, it was an amazing experience. Totally worth it for the fun and the memories. इसका पीक सीजन कब होता है भैया? अप्रैल में। ओके। अप्रैल में तो पानी नहीं रहता है ना? अप्रैल में वो 70 फीट है ना अभी। वो 50 फीट खत्म हो गया, 20 फीट बाकी। मिडिल एरिया ओनली राइड, बोट राइड मिडिल एरिया। अप्रैल में नो बोट राइड। बोट राइड अवेलेबल मैडम। बोट लेंथ राइड ओनली। लेंथ। तो अभी हम लोग ने कोरैकल राइड ट्राई किया यहाँ पे मुन्नार में इको पॉइंट पे और इट वाज ऑसम। व्यू तो बहुत ही अच्छा है, एक ऐसा टर्न आ रहा है और फॉरेस्ट व्यू है। यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी बहुत हैं, ऐसे वो भैया बता रहे थे कोरैकल राइड वाले। मज़ा आया ओवरऑल। अभी नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। So, our next spot was Blossom Park and the Rose Garden. It was a beautiful place to walk around, relax and enjoy colorful flowers all around. The entry ticket was 60 for adults and 30 rupees for kids. A nice and budget-friendly stop to spend some peaceful time. तो ये पूरे गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं, आप देख सकते हो, और बहुत अमेजिंग है, ब्यूटीफुल है और एकदम ज़बरदस्त है यार। यहाँ पे मतलब सारी जगह ग्रीनरी, फ्लावर्स और एटमॉस्फेयर ज़बरदस्त हो रखा है। धूप नहीं है, अभी 4 ही बज रहे हैं और फिर भी जो एटमॉस्फेयर है एकदम ज़बरदस्त है। सही। So now it was time to wrap up our second day in Munnar. What an amazing day it was. Next we are heading to Tekdi, where we are going to experience an elephant ride, watch traditional martial arts and cultural dance performance, and enjoy an exciting jeep safari. And of course, we will also be having some fun time at resort. If you haven't followed our channel yet, make sure you do, because the adventure just getting started.